Welcome to you all after a gap of around 7 days. So today we'll be starting linear algebra from year 2019 and we'll be solving all the PYQs one by one. So linear algebra it is. Year it is 2019. So there are all around 5 questions we'll be solving one by one. So given that T is a transformation from R square to R square is a linear map such that T of this is this and T of this is this. A is a matrix corresponding to T with respect to a standard basis. Standard basis of 2 cross 2, R cross R, E1 would be nothing but 1 comma 0 and E2 would be nothing but 0 comma 1. The standard basis to find the rank A. So basically first we have to find the transformation, then matrix A, then rank A. So given that T2 of 1, 2 comma 1 is nothing but 5 comma 7 and transformation 1 comma 2 is nothing but 3 comma 3. And now the bases are 2 comma 1 and 1 comma 2. Now we have to convert the bases in 1 comma 0 and 0 comma 1. So this is the thing that we need to do. So इस टाइप के सवाल पहले भी पूछे गए हैं. So there is a modus operandi, kind of particular modus operandi that we need to follow in order to solve such kind of problem. So what we need to do that जो हमें बेसिस डिमांड करते हैं जिसे हमें बेसिस में लिखना है, लाइक बेसिस वी हैव टू राइट इन फॉर्मेट ऑफ 1 comma 0. वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्मेट ऑफ द एग्जिस्टिंग बेसिस. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ ए 2 comma 1 b 1 comma 2 and now we have to find a comma b. So what we can do from here, the 2a plus b would be 1 and a plus 2b equals to 0. So now here from here what we will get here, so a would come out to be a is equal to minus of 2b. This we've got, and if we substitute here it will become minus 4b minus 4b plus b. Just we have substitute this here, minus 4b plus b is equals to 1, so b will come out to be minus 1 by 3. Then a would come out to be 2 times of this, minus of 2 times then a is this. So 1 comma 0 is nothing but a 2 by 3, 2 comma 1, b is nothing but minus 1 by 3, 1 comma 2. Now taking the transformation both the side, so t 1 comma 0 is 2 by 3 transformation of 2 comma 1 minus of 1 by 3 transformation 1 comma 2. I think we are correct. Yes. तो हमें पता है कि like 2 comma 3 is nothing but 2 comma 1 is nothing but 5 comma 7 minus 1 by 3, 1 comma 2, t 1 comma 2 is 3 comma 3. So if we do here, it will come out to be 10 by 3 minus 1, 7 by 3. Great. Then becomes 14 by 3 minus 1, 11 by 3. So this is transformation with respect to standard basis E1. Again we have to find the standard the transformation with respect to E2. So again we will be writing the E2 0 comma 1 as linear combination of the existing basis 1 comma 2 b 2 comma 1. Sorry, b1 is 2 comma 1, b1 is 2 comma 1 and this basis is 2 comma 1 and this is 1 comma 2, 2 comma 1. We have to follow the procedure step by step. Yes. So now again we will be finding the same a and b here. So 2a plus b would come out to be 0 and a plus 2b
इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आएगा b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इट कम आउट टू बी a माइनस 4a इज इक्वल्स टू 1, तो a वुड बी माइनस ऑफ 1/3। सिमिलरली b आ जाएगा 2/3। बस इसको रख देते हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन ही डायरेक्ट ले लेते हैं। तो a हमें पता है -1/3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2,1, b हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,2। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज of transformation, it was 5,7 if I'm not wrong, 5,7, yes, this is nothing but 3,3. If I do here, this will come out to be 2,2. This will come out to be -5,3 -7,3. This is nothing but what? This is nothing but 6 1,3 -1/3. So this is a and this is b. Yes, so matrix A with respect to transformation on E1 and E2 is, just we need to substitute these values in vertical format, like in kind of column way. 7,3 11,3 1/3 -1/3. So this is transformation with respect to basis E1 and basis E2. Why? How I wrote this? Like transformation with respect to E1 is nothing but 7 3 3 11 3. This can be written as 7/3 E1 11/3 E2. So that's why that's why similarly E2 can be written as 1/3 E1 plus. So this becomes something like this, and we have to write the coefficients in column format. So hence this matrix will become something like this. Now we have to find the rank of A. So here what we can do, remember that like ये coefficient हम कॉलम में लिखते हैं, ना कि रो में लिखते हैं. We have already discussed why we write this in the previous video. So अब आगे चलते हैं. तो बस रैंक हमें निकालना है. तो रैंक को हम लोग रैंक निकालने के लिए रो इकोलॉन फॉर्म में जाएंगे. If we or we can find the modulus. If the modulus comes out to be non-zero, then the row rank would be 2 basically, क्योंकि कोई भी रो जीरो नहीं होगा उस केस में. अगर मॉडुलस ए आ गया, मतलब डिटरमिनेंट ए आ गया, ए का जीरो आ गया, तो रैंक 1 हो जाएगा. तो व्हाट वी कैन डू हियर, डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट. तो डिटरमिनेंट विल कम आउट टू बी -7/9 -11/9. दिस इज नॉन ज़ीरो, देयरफॉर रैंक इज 2. ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी रो जीरो हो जाता तो रैंक तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाता. इफ एनी ऑफ द रो if any of the row becomes 0, then the modulus, then the determinant of A would become 0. But in this case, since the modulus is not 0, therefore rank is 2, because if we do transformation, row transformation, none of the row will come out to be 0 row. That's why there will be, in every case there will be some rows with non-zero elements. That's why the rank will become 2.
So now coming to the second question. Now we have to solve this. We have to first solve this and then solve the equation following system of equation. So basically using this we have to solve this. Now first we need to solve this a b क्या होता है ये हमें दिखाना है सबसे पहले. तो a 2 1 1 minus 4 1 3 0 minus 3. This is a. This is b would come out to be 2 1 1 1 minus 1 0 2 1 minus 1. अगर हम इसको करें तो उनका क्या होगा 1 2 4 6 1 minus 2 is what? Minus 1 1 0 1 0 0. इसका करें 2 minus 4 2 0 1 minus 4 6 6 minus 3. इसको कर रहे हैं तो 1 4 6 6 6 7 if I'm not wrong. I think so. नहीं तब तक आंसर मैच नहीं करेगा. you will be doing something wrong here. So 1 4 1 5 5 1 6. क्योंकि हमें प्रूफ करना है ए. अगर ये 7 आ रहा होता तो फिर हमें प्रूफ नहीं कर पाते. दैट्स वाई इट मस्ट कम 6. अदरवाइज ये सारा 0 आना पड़ेगा. Hence this is 6i3 of 3i3 basically identity matrix of order 3 cross 3. So hence we got what we need to prove. So now what we need to solve this, we need to solve this equation. So we're writing the equation, writing the equation in matrix format, writing the equation in matrix form. So it will come out to be 2 1 1 2 1 1 1 minus 1 0 2 1 minus 1 2 1 minus 1 x y z is nothing but 5 0 1. नाउ चूँकि हमको ये प्रूव करना है, इफ वी ऑब्जर्व क्लियरली ये वाला इज नथिंग बट ए. नहीं ओके ये वाला इज नथिंग बट बी. तो इट इज़ नथिंग बट बी एक्स बी. इसको मैंने एक्स बोल दिया थोड़ी देर के लिए, बी एक्स. इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए सी. तो बी एक्स सी हो गया. क्योंकि हमने मैट्रिक्स में हमने देखा था कि ये वाला बी था, हमने कुछ समय के लिए बोल दिया कि ये मैट्रिक्स एक्स है. हमने कुछ समय के लिए बोल दिया कि जो आरएसएस वाला को मैट्रिक्स है जो कि 3 क्रॉस 3 रोज 1 कॉलम का है उसको बोल दिया सी. तो ऐसा हो गया. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, प्री मल्टीप्लाई विथ ए. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है, इस वाले एक्सप्रेशन का यूज़ करना है. ए बी ये एक्स है, सॉरी, ए बी एक्स इज इक्वल्स टू ए सी. अब ए बी इज नथिंग बट 6i i3 इंटू एक्स ए सी. तो i3 इंटू एक्स इज नथिंग बट आई एक्स, बिकॉज आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स ही आता है. तो ए में पता होना चाहिए कि ए क्या था, लाइक ए 1 2 1. अब ए करें 1 2 1 1 minus 4 1 1 minus 4 1 1 minus 4 1 0 3 0 3 3 0 minus 3. C is nothing but 1 0 5 if I'm not wrong, sorry 5 0 1.
5 0 1 यस। तो अब क्या करें कि 6x को हमने लिख दिया XYZ। अब इसको करें तो 5 0 1 6 R1 C1 R1 C1। अब इसको करें तो ये आएगा 5 0 1 6, इसको करें 5 3 15 0 12। तो XY यहाँ से आ जाएगा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 1 2, हेंस x is equals to 1, y is equals to 2, 1, z is equals to 2 is the solution. Hence we got the answer that we need to find. Yeah, so just we have to identify कि क्या B was given the coefficient of matrix and we have to pre-multiply with A. Coming to the third problem, that this is a 15 marker question like A, B, 2 diagonal matrix of same order. Determinant of A plus determinant of B is 0, so that A plus B is singular matrix. Singular matrix means A is singular. A is singular only when determinant of A is equals to 0. Therefore, to prove A plus B का determinant 0 है, then only A plus will be singular. A plus B would be singular. Now, given that A plus B, A and B two orthogonal matrix. Orthogonal का मतलब क्या है? A transpose I and B transpose I orthogonal. Since orthogonal का definition ये. Now, given that also कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, तो ठीक है, A प्लस डिटरमिनेंट A प्लस डिटरमिनेंट B 0 है। तो अगर हम इसके तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लें तो डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ I is 1 एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A वुड बी ±1। सिमिलरली determinant of B would be ±1। अब चूंकि हमें given है कि like determinant of A, since determinant of A plus determinant of B is 0, so take इसको 1 ले लो and determinant of B को -1 ले लो, because it will make our life easy। चूँकि तभी possible है कि ये condition satisfy हो गए। Yeah, we are done. We are halfway done. So now क्या प्रूव करना है? A plus B is singular. Like many times हम लोग ये we tend to think along the line of vectors कि like A plus B का जो मॉडुलस होता है A square plus B square plus twice of A plus twice of B, ऐसा नहीं होता है in kind of matrix। Wrong. This is not wrong. This does not happen. In case of vector, this is true, but in case of matrix, this does not holds. So this is the identity. Many times we tend to think along this line, and we often go wrong while interpreting, while taking the identity as it is. So ऐसा होता है। So what we can do, हमें प्रूव करना है कि A plus B is singular matrix। A plus B is singular। तो like there are other methods also to show this। We'll be going through simpler method। So हम लोग क्या कर सकते हैं कि A I plus B I, ऐसा इसलिए लिखा, we'll be figuring out why I wrote this expression like this। So ऐसा करने से हम लोग I को लिख सकते हैं B ट्रांसपोज B, A को लिख सकते हैं A ट्रांसपोज B। ऐसा करने से हमें कॉमन मिल जाएंगे कुछ चीज़ें। we'll be taking out A
एंड बी कॉमन, तो ए कॉमन निकाला और बी कॉमन निकाला, तो इट विल कम आउट बी बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी. दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी. अब इस ये हाउ दिस बिकम यूजफुल कि दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम फैक्टराइज्ड. तो if we take determinant on both the sides, then we will be segregating a and b and these terms to it separately. So taking determinant both sides, हमें पता है, like let me write it completely. तो determinant of a plus b would be determinant of whole this expression. So I'm just segregating like a transpose plus b transpose plus b transpose. We know that determinant of ab is nothing but, since determinant of a determinant of b, ये हमें पता होता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है. Also we know that determinant of a transpose is nothing but determinant of a. So हमें पता है कि like a transpose का 1 है, b transpose b मत सॉरी a trans मतलब a मॉडल a determinant of a is 1, determinant of b is -1, and we know that determinant of a plus b का होल ट्रांसपोज, चूँकि हम लोग जानते हैं कि a plus b का होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. सो वी कैन राइट इट एज write this as, and we also know that determinant of a plus b का ट्रांसपोज would nothing but a plus b, and this is nothing but a plus b. So अगर इसको LHS में लेके आया तो 2 times of determinant of a plus b would be 0. This implies that a plus b is nothing but 0 because 2 is not 0. Hence, therefore proved. Hence proved basically. So we need to figure out कि like कैसे करना था, and how we need to know what is the basic definition. Like orthogonal का definition क्या होता है. Many times we tend to forget these things during the exam pressure. So by repeated kind of practice in the controlled environment, we can avoid such things and eventually get the final answers. Now again we have to solve this. For this, like find the rank of the matrix A. Rank जैसे कि हमने पहले भी किया था कि such kind of question has been multiple times repeated in the UPSC. So रैंक को करने के लिए हमें बस वही इकोनॉन फॉर्म में जाना पड़ेगा, एंड देयर वी विल हैव टू लुक कि कितने रोज हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज विल गिव अस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. So same philosophy will be applied here also. We have to deal with different numbers, but the concept is same. So A लिखा हमने. And now what we do here, like we transform this thing, transform कर दिया R2 को R1 से. Why? Because अगर हम लोग RHS मतलब जब pivot element 1 होगा तो it will be easier for us to make the coefficient 0. What is the pivot element? You must know because this is in theory part. So ऐसा हो गया. Like what? इससे फ़ायदा क्या होगा कि like it will be easier for us to make other rows 0. 5, 7, 2, 1. We have to be careful while copying down elements. Otherwise, many times we tend to do mistakes while copying also. Especially for me. Yes. Now we will be doing manipulations to reduce the elements 0. R3 को R4 को लिखा, R4 minus thrice of R1. R2 को लिखा, R2 minus 5 of R1. R3 को लिखा, R3 minus twice of R1. Now what we do here, अगर ऐसा करा हमने तो ये तो 0
नहीं, इसको 1 हो जाएगा ये। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 24 प्लस 3 माइनस 3 21 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे शुड बी द फाइनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। इट इज़ यूजफुल टू क्रॉस चेक। 24 ठीक है, माइनस 3 ठीक है, इसको करो तो ये 0 हो जाएगा, इसको करो तो ये 1 हो जाएगा। 9 16 11 हो जाएगा। 8 2 16 यस 8 16 21 आएगा यार। यस एंड दिस विल बिकम -2। अब ये रो सेम हो गए, इट्स फाइन। इसको 5 से 0, इसको 5 से 2, इसको 40 में 2 गया 40 में 42, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर घटाया -4। सो द लाइफ सीम्स टू बी ईजियर बिकॉज वी आर एबल टू सी कि 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों रो सेम हो रहा है, ये सेम है। तो R4 को कर दिया R4 माइनस R3। अब यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक R2 इज़ नथिंग बट R3 इज़ नथिंग बट R3 माइनस हाफ ऑफ R2। तो since we are able to see here, that's why it is easier for us to reduce the elements to 0 yes। अब एक और काम कर दिया, R2 को कर दिया हाफ ऑफ R1 हाफ ऑफ R2 बिकॉज कॉमन फैक्टर हट जाएगा। 0 1 21 -2 1 1 -8 1 yeah this we got here। So the number of non-zeros rows is 2 because इसके बाद हम reduce नहीं कर पाएंगे rows को 0 तक। Therefore the number of non-zero rows is 2 which is nothing but rank of A। Yes, yeah, this we did। And now the second part, dimension of vector space, dimension of subspace, dimension of the subspace, and this is nothing but kind of null space of A। V is nothing but null space of A। null space ऐसे एलिमेंट्स जो कि A को रिड्यूस कर रहे हैं 0 पे। तो A क्रॉस x is nothing but x1 x is 0 where x is x1 x2 x3 x4। ये हमें पता है, पहले अपन इससे लिखते हैं फुल फॉर्म में, लाइक बाय डूइंग मैनिपुलेशन A कैन बी रिड्यूस टू A। तो A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली मैं ये लिख रहा हूँ बिकॉज अगर A को हमने ओरिजिनल लिखा फिर फाइनली इसको मैनिपुलेट करके हम लोग इस पर पहुँच सकते हैं। सो राइटिंग इट एज 1 1 -8 1 0 1 21 -2 0 0 0 0 0 0 0। This will become x1 x2 x3 x4। now what we do here कि मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो इट विल बिकम x1 x2 -8 x3 plus x4 equals to 0। this will become x2 21 x3 -24 -2 x4। ओके, x2 को मैंने लिख दिया, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 2 फ्रॉम 2। x2 बोल दिया 2 x4 माइनस 21 x3। तो अब x1 को लिख दिया फ्रॉम 1 x1 would be 8 x3 माइनस x2 माइनस x4। x2 को डाल दिया यहाँ पे 8 x3
माइनस ऑफ 2x4 प्लस 21x3 माइनस ऑफ x4, इसको सिंप्लीफाई करा तो 29x3 माइनस 3x4। यस, तो अब हम देखें तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x3 एंड x4 and x1 and x2 are dependent on them. So we can be written as, since there are two independent variables, that is x3 and x4, therefore dimension of v is 2. तो v can be written as, हमें x1 पता है 29, x3 माइनस 3x, x2 पता है हमें ट्वाइस ऑफ x4 माइनस 21x3 x4 also where x3 x4 belongs to real number. So this is v, and there are two independent variables x3 and x4, that's why dimension of v is 2. So we are done. Coming to the last problem, Cayley-Hamilton theorem. Also such kind of questions are very much repeated, like many often these such kind of problems are repeated. Again हमें same pattern follow करना होता है कि like same चीज़ follow करो and you do the calculation correctly, you will reach the final answer without any hindrance. So we know that the Cayley-Hamilton theorem, as per the Cayley-Hamilton theorem, the matrix satisfies this characteristic equation. The characteristic equation of A, 1 minus lambda, is nothing but 1a minus lambda. ठीक है, तो 1 minus lambda 0 0 minus lambda 1 1 1 0 minus lambda. ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि इसको कर देते हैं 1 minus lambda स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब क्या किया कि ये लैम्डा 1 आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. सॉरी, हमें कैरेक्टरिस्टिक हमें रूट्स नहीं निकालने, हमें इक्वेशन बनानी है. एंड वी विल बी सेइंग दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सैटिस्फाइड बाय मैट्रिक्स एज पर द कैली-हैमिल्टन थ्योरम. ये तब होगा जब हम वेक्टर जब हम लोग क्या आइगन वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे, आइगन वेक्टर निकाल रहे होंगे, तब हमें जीरो करना पड़ेगा. So first we have to find out the characteristic equation. Characteristic equation A will come out to be 1 minus lambda square minus 1 is equals to 0. Here we have to find out, we do not have to find a root here, characteristic eigen value, but we have to find the characteristic equation. तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस लैम्डा क्यूब plus lambda equals to 0. Using Cayley-Hamilton theorem, we can say that this will be Cayley spelling सही है. Cayley-Hamilton theorem equation will be satisfied by this. A will be satisfied by matrix A, so we can write it here, a square प्लस a माइनस आई. ठीक है, सो मिल गया. अब वी हैव टू रिड्यूस 100 इनटू द फॉर्मेट ऑफ a. सो सिंपल थिंग लाइक नाउ a4 a raised to the power 4 is nothing but a cube, a into a cube is nothing but a cube plus a square minus a. तो ए क्यूब को हम लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई. ए स्क्वायर इज नथिंग बट सेम एज इट इज
माइनस ए से ए गया तो इट विल कम आउट टू बी 2a² माइनस आई। तो हमें एक ये फॉर्म मिल गया। Now we try to find out the even powers because we have to reach 100 which is even. 100 is nothing but even number. तो a6 पे चलते हैं। a6 is nothing but a² into a4. a4 is nothing but 2a² minus I minus identity. So इसको करें अपन तो a की पावर रेज टू द पावर 4 माइनस a²। आप a² को फिर a रेज टू द पावर 4 डाल दें वहाँ से। 2a रेज टू द पावर 4 इज 2a² माइनस I minus a² is nothing but 4a² minus a² 3a² minus 2i। तो एक पैटर्न हमें पता चल रहा है कि a रेज टू द पावर n, इसे 2n बोलते हैं, इज नथिंग बट इसका हाफ। तो n a² माइनस इसकी कोफिशिएंट है 1 कम। Yes, so this is the pattern we recognized, and similarly we'll be putting a 2 into 100. 2 into a raised to the power 100 is nothing but 2 into 50 is nothing but 50a² minus 49i। तो बस रख देना है, a² निकाल के रख देना है तो a हम निकाल सकते हैं। बस वैल्यू पुट करनी है, इसको बोलते हैं b। 1 1 1 1 यहाँ था 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। यस, आई थिंक वी आर राइट। a² निकल रही है। आई होप वी आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये बनाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0 1 0 0। I hope we are right. This and this. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, कुल मिला के 1। आई थिंक वी आर राइट। 0 0 0 0 1 0। I hope everything is cool। बस पुट करना है। 100 is 50 times of minus 49 times of this is nothing but नहीं लेते हैं तो ये 1, ये 0 0, ये 1 हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये 50 0 50, ये भी 0, यहाँ पे 1 आएगा। Yes, this is 50 well. Therefore, this is 800 is. Hence, we find out the answer will be. So we are done. Thank you all.